Word of the day. Answer means to reply to a question, respond to something or give a solution. मतलब जवाब देना, जवाब या रद्द अमल देना. Let's learn uses of the word answer with examples and practice sentences. English Booster by Kashwani. One word a day. Say it the better way. Subscribe for your daily dose. To reply to a question, सवाल का जवाब देना. Example, please answer my question. बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब दें. To respond to a call or message, फ़ोन या पैगाम का जवाब देना. Example, she didn't answer the phone. उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया. To give a solution or explanation, हल या वजाहत देना. Example, this book will answer your doubts. ये किताब तुम्हारे शकूक दूर करेगी. To react or reply to a situation, किसी सूरत हाल पर रद्द अमल देना. Example, he answered politely. उसने शाइस्तगी से जवाब दिया. Use as a noun, reply और solution, मतलब जवाब. Example, his answer was correct. उसका जवाब दुरुस्त था. Let's practice these sentences to save in your active memory. Learn and repeat. Please answer my question. बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब दें. She answered all the questions. उसने तमाम सवालों के जवाब दिए. He didn't answer the call. उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया. The student gave the right answer. तालिबे इल्म ने दुरुस्त जवाब दिया. Can you answer this question? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? She answered politely. उसने शाइस्तगी से जवाब दिया. I don't know the answer. मुझे जवाब मालूम नहीं है. Please answer honestly. बराए मेहरबानी ईमानदारी से जवाब दें. He answered the teacher confidently. उसने उस्ताद को एतमाद के साथ जवाब दिया. She didn't answer my message. उसने मेरे पैगाम का जवाब नहीं दिया. The book answers many questions. ये किताब बहुत से सवालों का जवाब देती है. Please write your answer clearly. बराए मेहरबानी अपना जवाब साफ लिखें. He waited for her answer. वो इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा. She quickly answered the question. उसने फ़ौरन सवाल का जवाब दिया. Your answer is correct. आपका जवाब दुरुस्त है. It's time to homework now. Make any 2 sentences with word and share in comment section to make collection of beautiful sentences for practice and use it in your daily life from today. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. Share and subscribe for more videos.